Hello everyone. So today we have Manish with us. Hello. So he is doing MS from IIT Bombay Computer Science Department. So today we'll be discussing everything about MS department because you guys have many questions about what are the categories of MS department and क्या क्या होता है, placements कैसा होता है and उसका कोर्स करिकुलम कैसा रहता है, प्रेशर कैसा रहता है. तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. मनीष सब कुछ बताएगा पॉडकास्ट में. तो पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो शेयर करना बाकी जो फ्रेंड्स एमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है. तो वीडियो एंड तक देखना. तो मनीष प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ए बिट. हेलो एवरीवन, आई एम मनीष और मैं यहाँ पर कंप्यूटिंग सिस्टम स्ट्रीम में एमएस बाय रिसर्च के प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ एंड आई गेव माय गेट एग्जाम इन 2022 and I am currently in my second year. Okay. Yeah, so my gate rank was 494. Okay. And I had a gate score of 714. Okay. And luckily enough, I was able to get an opportunity to give the written test for IIT Bombay. And the gate cutoff for IIT Bombay during my tenure was 700, I guess. So I was lucky to get the chance to write the written exam. And after completing the written exam and qualifying it, I was called for the interview. And yeah, that was the procedure for admission: written test combined with an interview. Okay. Yeah. तो मनीष इस साल के लिए जो 2024 में जो लोग गेट दिया है, उन लोग का एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा? कि सेम ही रहेगा कोडिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस? I guess it will be more or less the same. I don't think there is a coding round involved. Yeah, I guess this year there will be coding round for MS department. Okay, is that so? Like during my time, there was no coding round. It was just you had to select a stream: computing systems, intelligent systems, and theoretical systems. Okay. Depending on your interest and your comfort zone. So I'll just briefly explain what are those three streams. Yeah. So in intelligent, sure. So in intelligent systems, you basically deal with artificial intelligence, machine learning, and data science kind of stuff. In computing systems, you have the core subjects of computer science, like the subjects like computer networks, computer architecture, database management systems, operating systems. And in the theoretical side, you have theory of computation, algorithms. They basically deal with most of the algorithms and automata stuff. So depending on your interest, you can choose one of the streams, and you have to write the written examination and on that particular stream itself, and your interview would also be based on the stream you have chosen. So to prepare for interviews and written tests, you have to stick to the core concepts of GATE. You have to focus on more descriptive things, like how the TCP connection is established. More the conceptual things. More on the conceptual side of things, and basically all the things which involve a series of steps to get things done. Not just one or two steps. क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद follow-up questions आ ही जाते हैं प्रोफेसर से. Exactly, and things like how, for instance, you can say how the DNS assigns a domain. Yes. So those kind of things, and TCP three-way handshake, and in computer architecture, you have to explain everything about how all the components of the architecture combinedly work together, and those kind of stuff. So yeah, basically all the broader aspects of systems. Yeah, this is very helpful for them also. They can prepare this type of things from the gate. What is the cutoff for this year 2024 admission process for MS program? Yeah, so this year the cutoff is around 600 for general category students. Okay. For SC/ST, it's 2/3 of that, and for OBC also, I guess it's 600 only. Okay. And there will be a coding test also this year on 9th May in IIT Bombay itself. Here you have to come to IIT Bombay and give the admission, the coding test, and then if you are selected in the coding test, then you will be called for the interview the next or after that day. Yeah, हमारे टाइम तो ऑनलाइन ही हुआ था सब कुछ. हाँ, क्योंकि कोविड का टाइम था तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था हमारा. अभी थोड़ा मतलब ऑफलाइन. Yeah, it's better you get to know the campus in itself. You get a lot of exposure. Yeah, you get to see the department and everything. Yeah, so it's better. Yeah, Manish, in 2022 when you took admission, so what was the closing rank of MS program of IIT Bombay? Okay, so see, there was no written
thing on the closing rank, there was only a cutoff of gate score. So 700 was the cutoff for written test. So you can say that in 2022, when the gate score was around 700, the rank was approximately around 578 or something. And that should be the closing rank, around 578, 600, you can say. So it's a very good opportunity for you if you don't have a rank in top 100. So you should not lose hope of getting admission in top institutes. Especially in IIT Bombay this year, the cutoff has been further reduced to 600. So it's a lot of there's a lot more students that will get benefited from this, and they have an opportunity to apply for written tests and coding and everything. So they can get admitted here as well. Yeah, because if they give the coding test very well and the interview goes very well, there will be high chance for getting admitted. Sure. There are things like during the day of the gate exam, you miss 2-3 questions and your rank goes down to 200 or 300. Yes. So for those kind of students, it's a golden opportunity. Yeah. So guys, please apply for IIT Bombay MS program because it will be very, very beneficial for you. After coming here, you can see the difference of this IIT and other IITs. So Manish, there are some categories of MS program at IIT Bombay. So what are these categories? Can you elaborate? Yeah, sure. So broadly there are two categories, MSTA and MSRA. Okay. So the basic difference is that in MSRA, you before you join the college, you have a guide allocated to you. Okay. And your project and everything would be pre-decided based on your interview itself. Okay. And in MSTA, you have to do, of course, as the name suggests, you have to do the TA duty. RA people don't have the TA duty. They are just research assistants to the professors. Okay. And they help the professors in carrying out the research that the professors are themselves doing. And in TA, you have to do the TA duty. The coursework is same. You have to do 5 electives. Both MSTA and RAP people need to complete 5 electives in 3 years. And the major focus is on the research work. So in TA, you have to choose a guide after one semester is over. Same as the MTech TA people, right? Yeah, same as MTech TA people. In addition to that, you have a compulsory R&D course. Okay. That is you have 2 R&D courses. In fact, in first semester it's R&D 1. In second one it's just R&D 2. And those are just to season you for the upcoming main thesis work. Okay. So you get a very good idea about what the thesis work is going to be. So you show that you get very familiar with all the things that you are going to do in your main thesis work. So R&D is very helpful in that. And there is a very subtle difference, like for MTech people, they can also take R&D, but they will get 6 credits. And for MS people, they will get 8 credits for the R&D course. That's a subtle difference. Okay. So another difference between the MST and MSRA people. So MSTA people have a fixed stipend of 12,400 per month. They get Same it as the for MTech TA people. MTech TA people, and we will be getting the stipend for like the entire tenure. And MSRA people have a stipend of 12,400 in the first year, and it increments by 1,000 rupees every year. So it's not a lot, but yeah, what can you say? So it's like 12,000 in the first year, 12,400, 13.4k in the second, and 14.4k in the final year. Yeah. So Manish, what is the course duration of MSRA and MSTA? Okay, so it's a bit flexible. In the documents and all, you will see that it's written like 1.5x to 3 years is the duration for MSTA. And for MSRA also it's like that, but for RAs it's compulsorily 3 years. And for MSTA people, if your guide is satisfied with your work, like let's say you have published a paper in a top conference, something like that, so that counts as a significant amount of work done. Yes. So then you can graduate in as early as 1.5 years, although we haven't seen anyone graduating, because that's really a hell lot of work to do. In 1.5 years, you take at least 1 year to get familiar with everything. And so you cannot expect us to like complete our research work in 1.5 years. So but there are people who have completed the entire MS tenure in 2 years. So same as the MTech TA people. So there are 2 people who have completed their tenure of MS TA in like 2 years itself. And
that's the sweetest spot you can have. Yes. Because just after the placements you can leave the campus. And Yeah. so don't feel like it's compulsory 3 years for you. If you are determined enough, you can definitely complete it within 2 years. Yeah, it's possible. It's possible. It's very much possible. So Manish, many students thinking that MS program is kind of PhD programs, pre-PhD program, right? Like of thing. Is it true? Yes and no. Yes, because if you are interested in doing PhD, then it gives you a very good option of carrying out your own. You have a lot of time. You have, because the coursework is less. Yeah. As compared to MS, MTech TA people, you have to do like 9 courses, I guess, in 2 years. And people who are more interested in research, who actually want to do PhD, they will be required to do only 5 courses in 3 years. So there is a lot of time left for them to do their own research. Yes. And what else do you need other than time and resources to do research? So that gives you a very good option to explore. Yeah. And no, in the sense, it's not compulsory. Yeah, it's not compulsory. Many students like me and many other students, they are focusing on the placements also. So it's not a compulsion that you have to convert to PhD. There is no pressure from your guide also that you need to convert or something like that, although it's always an option. But you can focus on just completing the coursework, getting a placement and leaving the college. So it's both yes and no depending on you. So Manish, what are the opportunities you are getting with this rank? 500 you have said? 494, close to 500. Closer to and there are many students who Sure. So who are that they are thinking that what colleges they should pick up. Yeah. So why have you chosen IIT Bombay MS curriculum? Okay, so let's be honest here. See, in my rank and students who are in the range of like above 300 rank. Yes. So the chances of getting top 7 IITs diminishes by quite a lot. MTech program. MTech, yeah. It diminishes by a varying degree. So the thing is, I got admission in IIT Hyderabad also. And I even paid the fees for the first semester. Okay. And after that, I got to know the result of IIT Bombay that I am selected here. And of course, the hype of IIT. To be honest, frankly, it's IIT Bombay CSE. Yes. So one of the best. Yeah, one of the best in the country. Yeah. So you need to contemplate your decisions, man. At that point, you can't just leave it. Yeah. So it's a very good option for those students who have a rank of above 300 to prepare for this. And honestly, I was confident enough that I am not going to get any other MTech TA seat in the top 7 IITs. So this was my best shot. Yeah. That's very generous shot. Yeah. तो बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एमएस प्रोग्राम पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है, पीएचडी का फ्री है ना. तो तुमको क्या लगता है ये पूरा कोर्स वर्क है या रिसर्च ओरिएंटेड पूरा है? देखो, रिसर्च ओरिएंटेड तो है ऑफ कोर्स. तुम्हारा जो कोर्स वर्क के अलावा जो टाइम रहता है, तुम उसमें बेसिकली रिसर्च ही कर रहे होते हो. तो जो तुम्हारा थीसिस होता है, ठीक है, तो यू डोंट गेट क्रेडिट्स फॉर योर थीसिस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. हाँ, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना कि तुम्हें क्रेडिट्स नहीं मिल रहे थीसिस के लिए. But still, it's mandatory. It's mandatory. Okay. Yeah, that's your graduating requirement. In fact, okay, you need to have a very good thesis, and that includes either you have to publish a paper in a top conference, of course, in A-star or A-level conference, or if you have a patent, if you like file for a patent and it gets accepted within your tenure, and it's also a very good like it can be considered as a graduating requirement. तो देखो, ऐसा है कि कंपल्शन तो नहीं है बिल्कुल भी कि तुम्हें रिसर्च ही करना है, बट देयर इज अ वेरी गुड एलिमेंट इन लाइक तुमको जो थीसिस वर्क रहेगा तुम्हारा वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ही रहता है. ऑफ कोर्स डेवलपमेंट भी होता है काफी. तो एक्चुअली ग्रेजुएशन के लिए तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं यहाँ पे. एमटेक टीए में तो फिक्स्ड सब कुछ है कि लाइक तुम्हारे 9 इलेक्टिव्स खत्म हुए, तुम्हारा एमटीपी खत्म हुआ, तुम ग्रेजुएट हो रहे हो. फॉर एमएस इट्स सब्जेक्टिव, वेरी सब्जेक्टिव. Like it depends on the guide whether they are satisfied with your work. Yeah. They consider you have done a significant amount of work, and that word significant amount of work varies. Yeah, that's very subjective from professor 1 to professor 2. So basically you can say it's not a thumb rule or there is no written documented line like this,
but you can consider 3 P's. Like first is a paper, a published paper in a top conference. That can be considered as one of the significant amount of work done. The top conference means A or A star conference. A star or A level conference. Yeah. Second is a patent. If you file for a patent and it gets accepted, that can be considered as a significant amount of work done. And the third one is working on a product. Yeah. For instance, SAFE or Bodhi Tree, VLab, any kind of thing. Okay. So these are the things, 3 P's. It's not, again, I would say it's not a written line anywhere, but it's like these are the 3 things that basically it boils down to. Okay. तो तुम्हें अगर इन तीनों में से तुमने कुछ भी अच्छे से किया, that can be considered as a significant amount of work done. And all 3 of them involves research plus development work. It's not totally research that you will be surrounded by research papers and everything. You'll have to also have a lot of coding to be done in the time you have spending here. Yeah. And a lot of software development and many more things. So it's not entirely research, it's a very mixed area. जो 3 years कोर्स ड्यूरेशन है, मतलब ये क्या पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब 3 years के अंदर तुमको एमएस छोड़ना ही पड़ेगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर तुम्हारा काम ठीक से नहीं हुआ तो? As such अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है कि किसी ने काम ना किया हो और उसको नहीं जाने मिला हो. I don't think so. I think MS is pretty strict on the maximum duration. On the minimum duration there are a lot of ifs and buts, but on maximum duration it's pretty much 3 years. Okay, understand. And बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एमएस प्रोग्राम मतलब डेवलपमेंट है, पूरा सिस्टम साइड है, तो एआईएमएल साइड भी है. Of course. In fact, the C-Filt lab है हमारे पास यहाँ पे, वो बहुत से रिसर्च पेपर्स उससे एमएस स्टूडेंट्स ही पब्लिश कर रहे हैं. And you have theoretical department, theory side और system side है. तो ऑफ कोर्स हाँ, जो इनटेक है उसमें सिस्टम्स के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं. ओके, नो डाउट. बट जो AIML साइड है, that's a lot of pioneering research is being done on AIML side. And मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि like the few of the brightest students in our batch are from AIML side only in MS. Yeah, I agree. So it's like सब जगह सब काम हो रहा है. It's like तुम्हारा इंटरेस्ट है, मतलब ऐसा हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ यही ज्यादा हो रहा है, यही पार्ट कम हो रहा है. मतलब बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रहता ही है कि पूरा डेवलपमेंट साइड ही जाना है एमएस में, या सारे हम लोग का ऑप्शंस रहेगा ही रहेगा. हाँ, ठीक है, हर ऑप्शन है तुम्हारे पास. तुम इफ इट्स लाइक एन ओपन सी, तुम कुछ भी यहाँ आने के बाद, इफ स्पेशली इफ यू आर अ टीए स्टूडेंट, यू हैव अ वेरी बिग विंडो ऑफ लाइक एंटायर सेमेस्टर टू चूज फ्रॉम. ओके, सो आ रहे हो तो तुम्हारा फिक्स है, बट इफ यू आर अ टीए and it's an open sea, you can go any direction you want. Yes. तो अभी आते हैं मेन जो हॉट टॉपिक रहता है कि प्लेसमेंट का. Sure. अरे बिल्कुल. बहुत सारे बच्चे ये देख के आते हैं कि आईआईटी बॉम्बे एमएस का प्लेसमेंट कैसा है. ऑफ कोर्स. तो आई थिंक तुम अभी तक प्लेसमेंट में बैठे नहीं हो. अगले साल दिसंबर, इनफैक्ट दिस ईयर ओनली दिसंबर में. बट तुम देखे हो कि हमारे बैच में एमएस स्टूडेंट्स का कैसा हुआ है. तो प्लेसमेंट्स कैसा होता है एमएस बैच का? ओके, सो देखो, स्टैटिस्टिक्स, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स पे जाओ तो 22 स्टूडेंट्स थे एंड 19 और 20 ऑफ देम आर प्लेस्ड, 1 और 2 आर रिमेनिंग. वो भी हो जाएंगे फेज 2 में. हो ही जाएंगे. हाँ, फेज 2 में हो रहा है, तो दे आर गुड चांस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड. एंड देखो, बहुत स्मूथ सेलिंग तो नहीं बोलूंगा मैं. इट्स नॉट लाइक बहुत स्मूथ सेलिंग है, सब कुछ हो रहा है. देयर आर a few restrictions in some of the companies जो MS को नहीं लेना, प्रेफर नहीं कर रही है लेना. But yeah, our placement team is actively looking on these issues और इसको और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए आगे काम किया जा रहा है इस पे. आई थिंक इस बार 2 या 3 कंपनीज ही होंगे जो लोग MS के लिए थोड़ा वो कर रहे थे, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे. बाकी सारे कंपनीज MS या MTech दोनों के लिए खोल रहे थे. ओके, या मतलब आई didn't look at all, मतलब because मैं देख रहा था ना कि कौन से में खोल रहा है, कौन से I didn't look at all the statistics. पर मैं बस जो मेरे सीनियर्स ने बैठा, मैं उनकी बात सुन के बता रहा था कि there were cases like that. I have heard that there were cases where companies were not allowing MS students. Yeah, that's true. Yeah, so it's not like कि तुम्हें इक्वल एक और चीज थी. मैं कंपनी का नाम तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगा यहाँ पे. हाँ, बट स्टिल देयर वर सम कंपनीज हु वर ऑन द डे ऑफ प्लेसमेंट्स, they were not sure what is MS by research program.
Yeah, the awareness is not that Yeah, much the for awareness MS. factor is there. Yeah. And I really want to mention that the awareness factor is there. So you should not think that IIT बॉम्बे आ गए हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो ही जाएगा and everything like that. मतलब as in सॉरी हो ही जाएगा वाला पॉइंट नहीं बोलूँगा. It's not like तुम IIT बॉम्बे आ गए हो तो it's like तुम्हें फ्री में ऐसे प्लेसमेंट मिल रहा है. वो किसी को नहीं मिलता एक्चुअली. हाँ, वो किसी को नहीं मिलता. Everyone has to work for it. And बट हाँ, तुम अगर सिर्फ MST और MTech TA कंपेयर करना चाहते हो, थोड़ा एज मिलता है MTech TA को एज मिलता है थोड़ा, और बेसिकली ड्यू टू अवेयरनेस फैक्टर. या बट वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है. धीरे धीरे कम हो रहा है. या वी आर वर्किंग ऑन इट कि धीरे धीरे हम कंपनीज को जो डिफरेंस है एमएस एंड एमटेक का वो कम हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस फैल रहा है कि एमएस प्रोग्राम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के लोगों को पता भी नहीं है कि एमएस प्रोग्राम एग्जिस्ट भी करता है. एग्जैक्टली. एंड हमारे सीनियर्स जो अभी जाएंगे कंपनीज में, तो दे विल डू द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, और उनके काम से रिफ्लेक्ट होगा कि एमएस प्रोग्राम इज आल्सो वेरी गुड. एंड एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कोई कोई कंपनीज रिसर्च रोल के लिए हायर करता है, उसमें एमएस स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है. ठीक है, इस बार भी ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ. ओके. हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कुछ कुछ कंपनीज में जहाँ रिसर्च को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें एमएस को थोड़ा रिसर्च को एज मिलेगा. तो ज्यादा मत सोचो कि कैसे डिफरेंशिएट करता है. आई थिंक ये ठीक ही हो जाएगा. 2-3 साल बाद तो दोनों को इक्वल दिखा जाएगा पूरा, क्योंकि दोनों इक्वल ही है. लेट्स होप फॉर दैट. मैं अपने टाइम प्लेसमेंट में यही होप करूंगा कि इक्वल हो जाए. मैं तो इनफैक्ट अभी होप करूंगा अभी इक्वल हो जाए. होना भी चाहिए एक्चुअली. इक्वल ही है सब. हाँ, जस्ट अवेयरनेस के लिए वो लोग, अवेयरनेस वाला फैक्टर है. हाँ, बस और कुछ नहीं है. तो मनीष, इंटर्नशिप एमएस डिपार्टमेंट पे अलाउड है? क्योंकि एमटेक में अभी तक ऑफिशियली अलाउड नहीं है. ओके, सो एमएस में देखो इंटर्नशिप्स अलाउड हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. ओके, बट इट्स लाइक अगर इफ यू ग्रैब एन इंटर्नशिप फ्रॉम समवेयर, इट शुड बी रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क. ओके, तो प्रोफेसर्स इनफैक्ट तुम्हें और बोलते हैं कि तुम जाओ इंडस्ट्री में अच्छे से काम सीखो, एंड इट विल बी बेटर फॉर योर ओन रिसर्च. सो दे एक्टिवली लाइक they will not at all stop you. They will actively encourage you in fact to तुम जाओ और करो internship to get an industry experience out of it. That's very good. But ये है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि your research and your internship work is orthogonal, like तुम अलग ही कुछ कर रहे हो, और मतलब तुम you can't just say that I'm working there for money. That's not the thing. तुम MS में हो यहाँ पे, तो your main goal is to do research. And your internship should be aligned with that. Yes. तो आई थिंक हमारे बैच में इंटर्नशिप मिला भी है. हाँ, मिला है, काफी लोगों को मिला है इंटर्नशिप. किया है लोगों ने. And there are, in fact, this semester also many of the students, many of our friends are going for internships. So MS students also among them. तो that's very great opportunity for MS students. PPO का चांस भी रहता है फिर तुम्हें वहाँ से इंटर्नशिप से. इंटर्नशिप्स अच्छा होता है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है. एग्जैक्टली, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और एक्सपोजर भी मिलता है और ज्यादा. और क्योंकि ये 3 साल का है, तो तुम्हारा थोड़ा और भी ज्यादा टाइम भी मिलता है ना इंटर्नशिप करने के लिए. तो 2 समर वैकेशन मिलता है ना, आई गेस. तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो सेकंड ईयर में हो तुम. तो तुम्हारा अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है केएमएस प्रोग्राम का? क्या सोचे थे एंड कैसे चल रहा है? ओके, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी हमेशा बहुत रहता ही है. एब्सर्ड डिफरेंस रहता है दोनों में. बट मतलब थिंग्स टर्न आउट टू बी फॉर द बेस्ट. और ऐसा मैं बोलूँगा कि ठीक है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था, बट ऑल ओवर एक्सपीरियंस बोलूँगा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम काफ़ी मिला. और उसमें मैं अपना खुद के रिसर्च के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत फोकस कर पाया, especially in my reading, and I was able to devote time for reading classical novels, writing, and many other things, like I was able to do I was able to explore my creative side. ये बोल सकते हो. That's also very much important. हाँ, for all of us. See, the basic thing जो कि वो बहुत important है, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है. एकदम. how you are planning to utilize the time, that is a very important aspect. जो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा या बुरा कर सकता है. अगर तुमने टाइम वेस्ट ही कर दिया, ना तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सप्लोर किया, ना करिकुलर का अपना करिकुलम एक्सप्लोर किया, तो इट्स लाइक टाइम वेस्टेड, अपॉर्चुनिटी वेस्टेड एवरीथिंग. बट अगर तुमने उसको यूटिलाइज किया अपने खुद के लिए, तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. राइट, वो है. तो अभी तक
एक्सपीरियंस अच्छा ही चल रहा है। हाँ अभी तक अच्छा ही चल रहा है, अभी सो फार सो गुड। प्लेसमेंट्स भी हो जाएगा, बस मस्त। हाँ सही है, यही तो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी अगेन द सेम थिंग हो कम्स जाएगा अगेन। भाई, कोई प्रॉब्लम या नहीं। तो मनीष, अभी तुमको क्या लगता है एमटेक ये या एमएस कौन सा बेटर रहता है, मतलब स्टूडेंट्स को कौन सा प्रेफर करना चाहिए? ओके, इट्स अ ट्रिकी वन। देखो फिक्स आंसर तो कुछ नहीं है इसका यस, कि एमटेक बेटर है एमएस बेटर है। अगेन ये डिपेंड्स बहुत करता है, इट डिपेंड डिपेंड्स करता एंड है। बहुत सारे हाँ, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तुम्हारे। एकदम। अगर तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट ज़्यादा है ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तुम्हें यस। ऐसा चाहिए कि तुम्हें एकेडमिया में घुसना है हम्म। काइंड ऑफ, तो तुम बिल्कुल, और बट यू आर नॉट श्योर कि मैं 5 साल का पीएचडी कर पाऊंगा कि हाँ, नहीं, ये बहुत वैसा बड़ी है। बात है। हाँ। तो तुम्हारे लिए एमएस बहुत सही है हम्म। इफ़ यू आर फोकस कि नहीं मुझे अच्छे अच्छे कोर्सेज करके एक अच्छा अपना एक बैकग्राउंड बनाना है, हम्म। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में जाके अच्छे से काम करूंगा हम्म। फॉर दोस काइंड ऑफ स्टफ। एमटेक टीए इज बेटर हम्म। इफ यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि तुम्हें इंडस्ट्री में ही जाना है और तुम रिसर्च पे ज़्यादा टाइम देना चाहते हो बट उतना नहीं जितना थोड़ा कि फ्लेक्सिबल हो सकता है ना? फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एमएस इज बेटर। यस। यू गेट मोर टाइम एंड अगेन मैं बोल एंड रहा था time पे। अपॉर्चुनिटी मोर और लेस सेम ही रहता है उसके बाद। हाँ हाँ, मतलब देखो एमटेक के बाद भी तुम पीएचडी के लिए जा सकते हो, यस, एमएस के बाद भी पीएचडी के लिए जा सकते हो, एमटेक के बाद ही प्लेसमेंट है, एमएस में भी प्लेसमेंट है, ऐसी बात तो नहीं है। तो कुछ फिक्स आंसर तो नहीं है इसका, बट बाकी चीज़ें तो मैंने बताई ही हैं, तो उसके हिसाब से तुम जज कर सकते हो। अलाइन कर सकते हैं खुद को हाँ कि कौन से पोजीशन पे वो है, हाँ कि उसके हिसाब से जान सकते हैं कौन सा बेटर रहेगा उसके लिए। एग्जैक्टली। बस। If you have any tips for juniors who are preparing for GATE and who have already cracked GATE with Okay. good rank, so it will be very helpful for us because uh, who have cracked the GATE, there will be 3 months more before coming to IIT. They can utilize their time, and who are preparing for GATE, and your topper, your advice will be helpful. ओके for सो them also. अरे टॉपर तो ठीक है। सो जो लोग जिन लोगों का क्रैक हो चुका ऑलरेडी एंड दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अ गुड रैंक, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। Yeah. और तुम लोग अगर यहाँ आना चाहते हो तो जो प्रोसीजर है तो मैंने बताया ही था, रिटन टेस्ट इंटरव्यू सबका। तो एंड सो जस्ट कैरी ऑन योर विथ योर प्रिपरेशन, डोंट स्टॉप स्टडिंग। पढ़ो अच्छे से और जो ब्रॉडर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबको ज़्यादा ध्यान दो। और जो कर रहे हैं प्रिपरेशन अभी, तो आई जस्ट से कि डू योर बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट रैंक लाने की कोशिश करो। Yes. अगर एमटेक टीए वाला रैंक तुम टॉप 100 में आ जाओगे तो तुम्हारे पास प्लथीरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब तुम कहीं भी जा सकते हो। हाँ तो बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट लाइक अ रैंक अंडर 100, सो डोंट नीड टू वरी। तुम 500 के अंदर तक के विंडो में तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड लेट्स कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, यही बोलूँगा मैं। So thanks Manish for giving Thanks a lot Sayan for giving me the opportunity to share a lot of information. तो अभी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट आउट करो, हम लोग सॉल्व कर देंगे। एंड हम लोग का लिंक्डइन आईडी हम लोग दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी एमएस के रिगार्डिंग, कोई भी प्रिपरेशन रिगार्डिंग हम तुम लोगों का क्वेरीज हो तो हम लोग को कनेक्ट कर सकते हो। एंड शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एमएस के लिए, क्योंकि एमएस प्रोग्राम में क्या क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा कैसा है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल for getting more info about IIT's placements and GATE studies. Thank you.